Good morning, students. In today's class, I will be discussing about the habitat, external morphology, and the systems that is found in Peripatus. As I have already mentioned in earlier classes, that Peripatus is the connecting link between phylum Annelida and phylum Arthropoda. It has characteristics of Annelida also. It has characteristic of Arthropoda also. It has characteristic of Mollusca also, along with having similarities with all these phylum. It has got its unique character also. This I have discussed in my last class. Peripatus is also known as the living fossil, as it has originated millions of years ago during the Cambrian period. Now in this lecture, I will discuss about the other characters, about the habit of the animal, and about the uh, digestive system, circulatory system, and other systems. Peripatus is a terrestrial animal. It is found living in moist places, in crevices of rocks, under bark, stones, log, beneath fallen leaves, and other dark and damp places, or even along the stream bank. It is generally confined to humid habitat. And why is so? As in my last class, I have told you that the spiracles or the respiratory openings are scattered throughout the body, which are not guarded by the valves. So, if the animal is not living in a damp, moistened, or humid place, then there is a possibility that it will die of dehydration or desiccation. The water or the moisture from its body will be driven off, and it will die of desiccation. So this is one reason why it is found in the damp, moist places. पेरिपैटस एक स्थलीय जंतु है जो नम व अंधेरे स्थान जैसे चट्टानों की दरारें, पत्थरों या लकड़ी लट्ठों के नीचे या गिरी हुई पत्तियों के ढेर के नीचे पाया जाता है। यह एक नॉक्टर्नल यानी रात्रिचर जीव है। वह अन्य छोटे अकशेरुक प्राणियों जैसे कीट, कृमि आदि को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह एक मांसाहारी व शिकारी प्रवृत्ति का जंतु है। पेरिपैटस की कई जातियाँ पाई जाती हैं, लगभग 200 जाति पाई जाती है। इनमें से एक जो टाइप है वह है पेरिपैटस एंटीगुएंसिस। इसके अलावा पेरिपैटस माना आदि कई सारे और स्पीशीज़ पाए जाते हैं। The animal is nocturnal, predaceous, and carnivorous, as already mentioned. Most species feed on invertebrates, and as I have already mentioned that it is a viviparous organism, that is, it gives birth to young ones. In a single year, it produces about 30 to 40 young ones.
The external morphology. The body of Peripatus is caterpillar-like. It is soft, elongated, bilaterally symmetrical, more or less cylindrical, and ranges from about 2 centimeter to 15 centimeter in length. As already mentioned, the external segmentation is indistinct and marked only by the presence of paired appendages. Numerous annuli, that is, the superficial line marks on the body, is evident, but such annuli do not correspond to segmentation. The skin is covered by thin cuticle. It is soft and has velvety texture. The presence of velvety texture is a unique characteristic feature of Peripatus. The velvety texture covers the body and the cuticle is thrown into number of fine transverse ridges bearing numerous conical papillae or tubercle, which is armed with little chitinous spines. The coloration varies in different species from gray, brown, yellow, red, orange, etc. पेरिपेटस का शरीर लंबा व कृमि समान होता है। यह कैटरपिलर के जैसा प्रतीत होता है। इसका शरीर कोमल, बेलनाकार व द्विपार्श्व सममित दर्शाता है। इसकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक की होती है व इसके शरीर में बाहरी खंड विभाजन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, स्पष्ट दिखाई नहीं देते। केवल युग्मित यानी पेयर्ड अपेंडेजेस द्वारा ही खंडों का अनुमान लगाया जाता है। शरीर पर कई सतही छल्ले नुमा चिन्ह पाए जाते हैं जिनका खंडी भवन से कोई संबंध नहीं होता है। पेरिपेटस की त्वचा पतली क्यूटिकल से ढकी हुई होती है जो कोमल व मखमली प्रकृति का होता है। इसकी त्वचा में अनेक अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स सलवटें पाई जाती हैं जिसके बीच में अनेक कॉनिकल यानी कि श्वकाकार काइटिनस स्पाइन, कंटक स्थित पैपिली या ट्यूबरकल यानी गुल्लिकाएं पाई जाती है। पेरिपेटस की पृष्ठ त्वचा का रंग गहरा धूसर यानी डार्क ग्रे या ब्राउन होता है। अधर सतह का रंग रक्ताभ होता है। त्वचा का रंग किनारों पर नीले, हरे, लाल, काले रंग की मार्किंग्स देखने को मिलती है। पेरिपेटस के शरीर को हम प्रमुख रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक अस्पष्ट सिर यानी हेड
और दूसरा लंबा धड़ यानी ट्रंक। The ventral surface of the body is nearly always flesh colored, that is reddish in color. The dorsal surface has darker color. Blue, green, red, orange, or black coloration are found at the margins. The entire body of Peripatus can be divided into two distinct regions. First is the head, which is an indistinct region, and the second is the elongated trunk. Head. Head of Peripatus bears a pair of simple eyes, a pair of antennae, and a pair of jaws or mandible, and a pair of oral papillae. पेरिपेटस का अस्पष्ट सिर में एक जोड़ी पृष्ठीय नेत्र, एक जोड़ी श्रृंगिकाएं, एक जोड़ी स्लाइम ग्लैंड यानी कि अवपंख स्रावी ग्रंथियां व मुखीय अंकुरक यानी ओरल पैपिले व एक मध्य अधरीय मुख पाया जाता है, मिड वेंट्रल माउथ पाया जाता है। मुख में एक जोड़ी काइटिनस जबड़े पाए जाते हैं। Eyes. Eyes are simple and dorsal in position. They resemble the eye of ketopods. सिर के पृष्ठ भाग में एक जोड़ी सरल नेत्र पाई जाती है जो संघ एनेलिडा के कीटोपोड जंतुओं के समान होती है। Antennae. One pair of antennae are present. They represent the first pair of appendages. The antennae are ringed and taper slightly till near their termination, where they slightly are enlarged. The ring bears number of spines. The free end of each antennae is covered by a sheath of spiny tissue.